Hello everyone, welcome to the Facebook Live. This is the first time I'm doing a Facebook Live. For all those who are not even aware of who I am, my name is Mayank Shekhar. I'm a film critic. Well, I used to be a film critic, now everyone's a film critic. But I do it for a living. I've been doing it for almost 2 decades now. Have been a columnist and writer, and also currently entertainment editor with Midday, which is a Bombay-based newspaper. Uh, I have been asked to first, of course, introduce myself, but also spend time with all the members of this Bihar group. Thanks to Prakash from Germany. I'm speaking to all of you in English क्योंकि मैं आप लोगों को देख नहीं पा रहा हूँ उस वक्त और मुझे बताया गया है कि ये जो ग्रुप है ये एक्सपैट्रिएट पॉपुलेशन का ग्रुप है सारे नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं काफ़ी सारे लोग तो ज़्यादातर लोग और अगर जर्मनी में रहते हैं या इंग्लैंड में रहते हैं तो जाहिर है कि आप लोग अंग्रेज़ी तो बोलते ही होंगे मैथिली नहीं बोलते होंगे या भोजपुरी नहीं बोलते होंगे आम जनता के साथ बट येस आई विल keep switching between English and Hindi. The topic that I've been given to speak about is Bollywood in Bihar, or rather Bihar and Bollywood, and I'll look at both these aspects actually of Bollywood in Bihar, which is essentially the aspect of how films per se have been set in Bihar, have sort of captured the culture of the state, the politics of the state, the crime of the state, the characters of the state, everything to do with the state, the history of the state to a huge extent. And of course, all of us, जो भी लोग यहाँ पे इस ग्रुप में हैं, सब ने कोई किसी न किसी फिल्म को देखा होगा जो बिहार में स्थित हो और सबकी अपने फेवरेट फिल्म्स होंगी, whether it's a mainstream film या अगर वो एक it's a non-mainstream film, it's an offbeat film, it's an art house film, but by and large बहुत सारी फिल्में स्थित रही हैं, सेट रही हैं बिहार में. अगर मुझे पर्सनली अगर चूज़ करना पड़े एक पर्टिकुलर फिल्म तो पहले तो मैं ये बता दूं कि ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों की तरह महल में बहुत साल बिताए हैं 2000 साल से पहले 2000 से पहले जब बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ. सो फॉर मी पर्सनली कोई ख़ास मुझे अंतर दिखता नहीं है झारखंड और बिहार में. एंड इन दैट सेंस आई वुड लाइक टू से सेटिंग के हिसाब से माई फेवरेट फिल्म वुड हैव टू बी अनुराग कश्यप्स गैंग्स ऑफ वासेपुर. ऑफ कोर्स ये एक धनबाद में स्थित है. वासेपुर एक इलाका है जो धनबाद में है. एक इंटरजेनरेशनल कहानी है, एक हिस्ट्री है एक तौर से, inspired by very real stories that took place in that area. So एक तरह से कहानी दिलचस्प भी है और कहानी सत्य भी है, सच भी है. It's based on true incidents, true characters. We are all aware of the coal mafia of Dhanbad. In fact, अगर हम कोल माफिया की बात करें, then if you go back to the mid-70s, जो चसनाला माइंस ट्रेजेडी जो हुई थी उस पर भी एक बहुत ही फेमस बॉलीवुड फिल्म बनी थी जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा थे जो कि माइट बी द मोस्ट फेमस बिहारी इन बॉलीवुड. उसमें अमिताभ बच्चन भी थे हु इज़ ऑफ कोर्स द मोस्ट फेमस इंडियन एट सम लेवल. द मूवी वाज कॉल्ड त्रिशूल जिसको यश चोपड़ा ने डायरेक्ट किया था एंड विच वॉज अ फैबुलस फिल्म जो भी कोल माइंस में अगेन सेट इन धनबाद जस्ट द सेम वे एज गैंग्स ऑफ वासेपुर. ऑफ कोर्स इन दोनों को तुलना करना इम्पॉसिबल है प्रोबब्ली बिकॉज बहुत ही अलग कहानियाँ हैं, बहुत ही अलग जॉनरा है इन दोनों फिल्मों का एंड ऑफ कोर्स अलग तरीके के डायरेक्टर्स भी हैं. अनुराग कश्यप ने डायरेक्ट किया गैंग्स ऑफ वासेपुर को विच अनुराग ऑफ कोर्स कम्स फ्रॉम बनारस एंड अगर हम ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी की बात करें तो इट्स अ लॉट लाइक बिहार इन द सेम वे द झारखंड इज़ अ लॉट लाइक बिहार. एक बेल्ट, उस बेल्ट में बहुत सारी जो लोग रहते हैं उनके खाने का तरीका, उनके बोलचाल का तरीका, उनके रहन सहन में काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको कॉमन लगेंगी, विच इज़ वाई इट्स ईजी फॉर समबडी लाइक एन अनुराग कश्यप फ्रॉम बनारस टू मेक अ फिल्म विच इज़ सेट इन धनबाद and perhaps make it in the most interesting way, but also capturing the local ethos of the place, capturing जो एक खुशबू जो है या बदबू कह लीजिए जो मिट्टी की है उसमें पूरी झलकती है या कोल की जो है वो पूरी झलकती है. बट अगर हम थोड़े पीछे जाएं then I think my favorite film before Gangs of Wasseypur, which is set in Bihar, would have to be again to do with Anurag because he wrote that film, would have to be Shool, जिसको राम गोपाल वर्मा ने प्रोड्यूस किया था. मनोज बाजपेयी उसके लीड एक्टर थे, who is also a hugely popular Bihari in Bollywood.
I think he might be among the current lot. He is possibly the most hardcore leading man जो बिहार ने दिया है बॉलीवुड को. सो इट वुड हैव टू बी शूल, जिसको ई निवास ने डायरेक्ट किया, बट राम गोपाल वर्मा ने प्रोड्यूस किया और अनुराग कश्यप ने लिखा, एंड मनोज बाजपेयी उसके लीड एक्टर थे. एंड वाज लाइक अ हार्डकोर कॉप ड्रामा थी वो फिल्म. इट रैंक्स एज वेल एज मोस्ट अदर ग्रेट कॉप फिल्म्स दैट वी हैव सीन, चाहे वो आप अर्ध सत्य जैसी फिल्म ले लें आप, या बहुत सारी जितनी भी कॉप फिल्में बनी हैं. अर्ध सत्य ऑफ कोर्स डायरेक्टेड बाय गोविंद निहलानी. बट इफ वी गो बैक इन हिस्ट्री, एंड कुछ ऐसी फिल्में होती हैं जो इस वक्त उनके बारे में बात करना मुश्किल होता है, प्योरली बिकॉज हमें पता नहीं कि शूल लोग याद रखेंगे 30 साल 40 साल बाद या नहीं. बट वी ऑल नो, जहाँ तक बिहार का सवाल है, तो फिल्म लाइक तीसरी कसम को बासु भट्टाचार्य ने बनाया था, डायरेक्ट किया था. राज कपूर इसके लीड एक्टर थे. शैलेंद्र ने उसको प्रोड्यूस किया था. शैलेंद्र जो कि बहुत ही फेमस लिरिसिस्ट थे, एंड एज अ लिरिसिस्ट again from Bihar, आरा जिला के थे, if I'm not mistaken, and it was a film based on a story written by one of Bihar's most famous authors, फणीश्वर नाथ रेणु. Again if I'm not mistaken वो पूर्णिया से हैं. रेणु ने एक शॉर्ट स्टोरी लिखी थी पंचलाइन, उस पर हाल में ही एक फिल्म बनी थी जिसको रिलीज़ भी किया गया. पंचलाइन पर एक फीचर फिल्म भी बनी थी, विच आई फिगर अ चांस यू शुड सी इट. बट तीसरी कसम purely in terms of popular culture, in terms of cinema history, in terms of how many people have still seen it, how many people go back to it. इसमें मुझे याद है मैथिली में भी डायलॉग है इस फिल्म में, एंड ऑफ कोर्स उसमें राज कपूर का होना, who was the biggest star of that time and biggest star director also, जिन्होंने बासु भट्टाचार्य के अंदर काम किया इस पर्टिकुलर फिल्म में. आई थिंक तीसरी कसम remains a बिहारी लैंडमार्क so far as films, so far as Bollywood in Bihar is concerned. सेटिंग भी बिहार है, कहानी बिहार के लेखक ने लिखी है, बिहारी ने प्रोड्यूस किया है. So that's roughly, of course, मैं चाहूँगा कि आप लोग while you're responding to the messages, आप लोग भी अपने फेवरेट फिल्म्स लिखते जाएं. इट गिव मी अ चांस, अगर मैंने नहीं देखी हो तो मुझे देखने का मौका मिलेगा, या उनके बारे में ज़्यादा पढ़ने का मौका मिलेगा. तो आप लोग भी अपने फेवरेट फिल्म्स जो बिहार में स्थित हों या बिहारियों ने बनाई हों, आप इस पर्टिकुलर कॉन्वर्सेशन में डाल सकते हैं. इस वक्त तो मुझे जय बिहारी दिख रहा है, जय बिहार एंड हेलो काफ़ी दिख रहे हैं. बट so that's one aspect of it. I think the other aspect that I thought I would have liked to touch upon, by and large, is of course जो बिहारी लोग हैं वो जो बॉलीवुड में काम करते हैं. एंड ऑफ कोर्स बहुत लोग हैं, बट मेरा ऐसा मानना है कि जितने हो सकते थे उससे बहुत कम है. एंड दैट इज़ बिकॉज कि ज़्यादा क्यों होने चाहिए थे, प्योरली बिकॉज हम जब बॉलीवुड शब्द का इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली हम बात करते हैं बॉम्बे फिल्म्स की, फिल्म्स जो बॉम्बे में बनी हों. एंड उस तरह से अगर देखा जाए तो जो फिल्म जो बॉम्बे में बनती हैं और पूरे देश में देखी जाती हैं, या देश के बाहर भी जो भारतीय लोग हैं या भारतीय डायस्पोरा है, जिसे हम देसी और या देसी लोग जिसे हम कहते हैं देश के बाहर, जो कि साउथ एशियन कल्चर्स को बिलोंग करते हो, चाहे वो बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, ये जो फिल्में जो देखते हैं, ये जो बॉम्बे फिल्में देखते हैं, ये फिल्में होती हैं हिंदी भाषा में. एंड अगर आप बॉम्बे आएँ, और आई एम श्योर आप सब आ चुके होंगे कभी न कभी ज़िंदगी में, तो आपको ये ज़रूर पता चलेगा कि जहाँ से हिंदी फिल्में बनती हैं, यानी कि बम्बई शहर, वहाँ के जो लोग हैं उनका हिंदी उतना अच्छा है नहीं, उतना क्लियर नहीं है. उनकी अपनी एक भाषा है जो कि अपनी एक डायलेक्ट है हिंदी की, जिसे हम बम्बैया कहते हैं. इसमें काफ़ी लैंग्वेजेस का थोड़ा मिक्सचर भी आता है. एक बोलने का जो लहजा है वो टिपिकली बम्बैया है, जो हमें फिल्मों में देखने को मिलता है. बट जो फिल्में जो हम सब देखते हैं, जो पूरे मेन स्ट्रीम ऑडियंसेस के लिए बनाई जाती हैं, वो ख़ास तौर पर हिंदी में बनती हैं. और हिंदी में जो पकड़ है जो बिहारियों का है, वो बहुत कम लोगों का मैंने देखा है अपनी बोलचाल में. जिस तरह की हिंदी बिहार के लोग बोलते हैं, जितना कमांड, जितना स्ट्रॉन्ग होता है बिहारियों का, वो मैंने नहीं देखा है बहुत लोगों में. सो दैट इज़ एन एडवांटेज जो उनके पास पहले से ही है, जो हमने शायद या बिहारियों ने शायद उसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया, या ज़्यादा कर सकते थे इन टर्म्स ऑफ राइटिंग इन हिंदी, इन टर्म्स ऑफ वर्किंग इन हिंदी सिनेमा.
एंड इतना नहीं हुआ मेरे हिसाब से, दो तीन मेरे मेरे कुछ रीजंस हैं जो मैं सोचता हूँ कि शायद दिस समथिंग दैट वी कैन डिस्कस। वन, मुझे लगता है कि अगर आप बाय एंड लार्ज देखें तो बम्बई शहर जहाँ पे फिल्में बनती है, जहाँ पे फिल्मों का निजात भी हुआ, जहाँ तक इंडिया का सवाल है, इट वाज इन्वेंटेड इन इंडिया, और व्हाट वाज फर्स्ट फिल्म वाज मेड इन बॉम्बे। राजा हरिश्चंद्र बम्बई शहर में बनी थी वो फिल्म। सो विच वाई एक तरह से वो घर बन गया फिल्मों का। बट 1970s में जब माइग्रेशन, मास माइग्रेशन मुझे लगता है जब हो रहा था, तो यूपी से बहुत लोग आ रहे थे और बिहार से बहुत लोग जा रहे थे शहरों में काम करने के लिए। और अगर आप नोटिस करेंगे, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे दो ट्रेन्स थी और एक ट्रेन यूपी से जा रही थी, और लोगों को चॉइस था कि वो ट्रेन पकड़ें जो दिल्ली जा रही है, दिल्ली तो बाद में आया, दिल्ली कलकत्ता जा रही है या बम्बई जा रही है। एंड आई थिंक यूपी के लोग ने चूज़ किया बम्बई आने का, और बिहार के लोगों ने चूज़ किया कि वो कलकत्ता जाए। इसीलिए अगर आप बाय एंड लार्ज देखेंगे तो कलकत्ता में जो जो तादाद है, जो पॉपुलेशन है बिहारियों की, इज़ मच हायर दैन द वन दैट यू सी, द नंबर ऑफ बिहारीज दैट यू सी इन बॉम्बे सिटी। एंड सो ऑब्वियसली कम बिहारी हैं, तो अगर बम्बई में ही कम है तो जाहिर सी बात है कि फिल्मों में भी थोड़े कम दिखेंगे। बट द सेकेंड थिंग ऑल्सो इज़ द फैक्ट, और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह what Bihar is to India, India is to the rest of the world in terms of migration. And by and large बहुत सारे लोग अपने स्टेट से निकलकर टू लुक फॉर जॉब्स वो जाते हैं बिहार से, और बहुत सारे कोनों में, इंडिया के बहुत सारे कोनों में, मैंने तो हर जगह देखा है, चाहे वो कांडला पोर्ट हो, चाहे वो खंडाला हो, चाहे वो केरला हो, आपको बिहारी ज़रूर दिख जाएंगे जो काम करने के लिए अपने घर को छोड़कर वहाँ पहुँचे हैं। एंड माइग्रेंट्स का जो ज़िंदगी होता है, चाहे वो किसी भी क्लास में हो, आसान नहीं होता है, बिकॉज यू हैव एट सम लेवल, आपकी जड़ जो है वहाँ पर नहीं है जहाँ पर आप रहते हैं, जहाँ पर आप काम करते हैं। वैसा ना होने से यू हैव टू क्रिएट योर ओन सोशल सिस्टम। एक सोशल बैकअप जो आपको मिलता है अपने घर पर, वो आपको व्हेन यू आर माइग्रेंट नहीं मिलता है, उतनी आसानी से नहीं मिलता है। ऑफ कोर्स और लोग जब आते हैं तो यू क्रिएट दैट सेम एटमॉस्फेयर ऑल्सो, यू क्रिएट दैट होल सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो। बट अगर जिस तरह आप इंडियंस को देखेंगे, जब आप व्हेन यू लुक एट इंडियंस अब्रॉड, इन द सेम वे दैट यू लुक एट बिहारीज हु लिव आउटसाइड द स्टेट, द फर्स्ट जनरेशन का जो ये होता है, जो एक कर्तव्य होता है, इज़ टू मेक अ लाइफ फॉर देमसेल्व्स, and which is usually done through taking up certain jobs which are more secure by nature, which are more safe, have a stronger safety net, which is why you will see a lot of Indians abroad who are at the top echelons of society outside in the West, especially, who are doctors, who are engineers. Likewise, you will see a lot of Biharis settled outside Bihar, again in similar positions of power, or work which is directly very professional by nature, again engineering and medicine. And then you'll of course also find them in bureaucracy in the case of India, and corporate bureaucracy in the case of Indians abroad. So now when you are the first generation migrant, I think that becomes your core area where you would like to sort of ensure that even your children take up more safe jobs by and large. So एक वो सोच है कि आज इंडियन पेरेंट्स हैं, वो चाहते हैं कि डॉक्टर इंजीनियर बने, वो सोच जो है वो 70s 80s की सोच है। And of course there is that other class of migrants जो कि एकदम typical working class होते हैं, and they would also want their children somehow to find jobs first. So एक सोच अगर आपकी ऐसी हो, then the move towards things which are little more, for lack of a better word, little more unsafe in terms of financial security, which would be in the fields of arts and entertainment, कि यहाँ पे आपको श्योरिटी नहीं है कि हर महीने आपको तनख्वाह मिलेगी, यहाँ कोई श्योरिटी नहीं है कि आपको काम मिलेगा, बिकॉज कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है इन सब काम के लिए। बाय एंड लार्ज इट्स अ वेरी क्वालिटेटिव नेचर जो काम होता है, तो कभी कभी लक पर भी बहुत निर्भर होता है। देन यू वुड नॉट वांट योर चिल्ड्रन
to take up these professions. So what you see, especially like for instance among Indians abroad, is abhi aapko dekhega around the 2000 onwards you'll see a lot more Indians in media and entertainment in the West, especially in America, in the United Kingdom also. These are second generation migrants who now are, you know, almost part, have become mainstream to the culture they belong to. Then likewise you will see a lot of people who are from Bihar, perhaps second generation migrants, who are a lot more in fields like media and entertainment, whether it's stand-up comedy, whether it's films, whether it's music, whether it's you know, among YouTubers, in news media. So it's been a very natural process, and I think you'll see far more Biharis now, even in Bollywood, than you have done before. Because second thing has also happened. आई थिंक ओवर ईयर्स एक कल्चर में एक बात थी, एक सोच थी, स्पेशली अमंग बिहारीज फॉर लॉट्स ऑफ रीजंस, कि यार ये जो फिल्में जो होती हैं ये बड़े अनइंटेलेक्चुअल टाइप का काम होता है. दिस इज़ नॉट समथिंग, दिस फॉर पीपल हु आर नॉट वेरी ब्राइट, इट इज़ फॉर पीपल जो जिनको सिस्टम ने रिजेक्ट किया हो, दिस फॉर पीपल हु डोंट स्कोर मच इन एग्जाम्स. जो कंपटिशन में जो तैयारी जो होती है, जो बिहार को एक आदत पड़ गई है. So in that sense, by and large, अगर आप acting में रुचि रखते हैं, then the society look down upon you. Your own relatives look down upon you. Likewise, if you were interested in writing, then they also look down upon you from the end of कि कैसे तुम्हारी कमाई होगी, but also look down upon you कि यार तुम क्या मतलब फिल्मों में काम करोगे, as if all the work that there is to be done in films is acting and is only dancing and is only singing. The fact is that there are lots of other professions which are deeply intellectual by nature also, which a lot of those kids similarly inclined could have taken up, who did not. And then there is nothing whatsoever wrong with certain talents that you have, which you should be actually encouraged to take up. But by and large, there was no encouragement in most middle class families, even working class families, and certainly the upper caste families in Bihar, in villages, in small towns. I remember there used to be the whole phase back in the 90s and the 80s that, you know, there used to be runaway boys, boys who would run away from their homes, landing up in Bombay with no social security, no security net, hoping to make it in films, because their parents, their families would not accept them to come to a city like Bombay and attempt. Also because it was much harder then. You could either make it or go completely bust, which is not the case anymore. You can find jobs in media and entertainment and Bollywood, you know, doing web series, doing television, doing YouTube, doing, you know, and of course feature films, short film. So there's work for everyone, which was not the case before. So जाहिर है कि पेरेंट्स भी मतलब भला ही सोच रहे होंगे कि भैया तुम ऐसे भाग तो जाओगे, वहाँ पहुँच तो जाओगे, लेकिन ज़िंदगी में करोगे क्या. So that's another reason why I think there hasn't been, because of the specific culture that Bihar has always been, the outlook that the families have had towards certain professions, and the very nature of those professions, given that we are by and large, we've been raised to look out for social security and monetary security, a monthly salary before anything else. So I think that is the reason why we don't see as many Biharis in Bollywood as we see so from people from so many other states, despite an advantage that Biharis do have. One is that they're deeply, you know, connected to a North Indian culture, especially by way of language, but also history, and Bollywood is a North Indian popular culture primarily. It is a Hindi film industry. So I think that is going to change slowly, if it hasn't changed already. The last point that I would like to make, and this has been something that I've been observing for many, many years, meeting a lot of people who work in the films, who work in the media, who were extremely popular and successful in the entertainment business, but they don't like to accept the fact that they are Biharis. एक inferiority complex रही है बिहारियों में, अपने स्टेट को एक्नॉलेज करने में, अपने सोसाइटी को एक्नॉलेज करने में, अपने कल्चर को एक्नॉलेज करने में. एंड ऐसे मैंने बहुत, मतलब एट अ पर्सनल लेवल मैंने ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखे हैं. Like for instance, a very big actor, one of the rare ones actually, was a lead actor directly from Bihar, and I met him on a flight. We of course knew each other by work,
And throughout when I was talking to him, and I kept, and he did not know that I'm from Bihar as well. And because I knew about that connection, I kept bringing up that fact, kept talking to the person about how he is perhaps from Saharsa, or did he then move to Patna, and then how long was he in Patna? Whereas he kept making it about how he's from Delhi, that he went to an engineering college in Delhi, that he learned everything that there is to learn, which he may well have, but that's not. I mean, there's no reason to deny your roots in terms of ancestry, especially when the other person is making that conversation and you're trying to evade it. That's when I realized कि यार एक तो बहुत कम बिहारी हैं, और जो हैं वो एक्नॉलेज ही नहीं करना चाहते हैं, या कम से कम दे डोंट सी एनी वैल्यू in sort of flaunting that fact, and probably that's why they don't they'd rather be considered mainstream in the world that they're part of, and be mainstreamed, and rather than be seen as an outsider, which has always been the worry with all establishments, and cultural establishment is not an exception in that regard. I think I've gone on for about 20 minutes now. So, well, thank you very much, all of you, at this lovely forum. मुझे कहा गया कि भाई यहाँ सारे लोग बिहारी होंगे. So I think the only time I've been with that many Biharis in that case, listening to me, would be when I am in Bihar. So I'm just going to think that I met all the Biharis on Facebook instead. So all the rules apply. So I'm not going to serve you any alcohol. There's going to be no beers for you. But thank you for joining me at this party. This was a lot of fun, and I hope to keep in touch. If you want to find me, I'm on Facebook, Facebook/MayankW14. I am on Twitter, Twitter/MayankW14. I'm on Instagram, Instagram.com/MayankW14. I hope to keep in touch. As everyone's saying here, Jai Bihar. Thank you.